अच्छा तेज आम टे मॉडर्न हिस्ट्री विषय डिस्कसन करदे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द ओडिशा with the advent of the modern era ओडिशा come under the European powers like Portuguese British ଯେମିତି ତମର ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ତମର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆଉ 1498ରେ ତମର ଭାସ୍କୋଡାଗାମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିଲା ତମ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର ସେ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ରହିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା although the Portuguese were the first European to build factories in the Odisha, but it's the British East India Company which ruled over the Odisha, and they captured the Odisha in a strategic way. Okay, the phase of the Odishan history is dynamic because it is resistance, revolt, बहुत सारा history modern history रे begins with the advent of the Europeans, battle of Boxer ହେଇଗला तुम जान कि तुम जो टाइम रे तुम चलता से जो बैटल ऑफ बक्सर हिस्ट्री तो तुम इंडियन हिस्ट्री बहुत भलसे सब देखी से बैटल ऑफ बक्सर जो टाइम रहीगला दीवानी राइट सब पड़ेगा बेंगल बिहार ओडिशार तुम क्या हाथ को ब्रिटिश हाथ को हाउएवर इट इज मार्क्ड बाय वेरियस रिबेलियंस देन तुम पाइक रिबेलियन हो खुर्दा रिबेलियन हो आगे विषय में देखा मेनी ट्राइबल अपराइजिंग भी होइछा लाइक योर घुमसार एंड भूइया अपराइजिंग इम्पैक्ट of the revolt of 1857 was felt in the Odisha also as many people as participate in it. But in 1866 रे Odisha was struck with great famine. The death of the toll estimate to be 1 million 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରି ଯାଇଥିଲେ ସେ great famine ଯୋଡ଼ା 1866 ରେ ହେଇଥିଲା. After this British came up with the educational reform. Many socio-religious movements started in Odisha at the same time. At that time like Satya Mahima लाइक धर्म सप्त महिमा धर्म ब्रह्म मुवमेंट ये सब टाइम स्टार्ट होता अच्छा जो टाइम पर्तुगीज इंडिया को आसिले तो आस्ते आस्ते पर्तुगीज आमर ओडिशा को आसिले तो ओडिशा को आसिक कौन कौन कले ये फास्ट यूरोपियन जे आमर आसते इंडिया ओडिशा को ना था कौन पर्तुगीज दे एस्टाब्लिश देयर सेटलमेंट एट द पिपिली इन द बालेश्वर डिस्ट्रिक्टर पिपिली ठी से तमर करते एस्टाब्लिशमेंट इन अराउंड 1625 देयर कम्युनिटी flourished in the 16th century. They built churches, some factories. The Britishers could not establish their settlement properly due to the presence of the Portuguese till the 17th century. Then form of the middle 7th century से कोई तमर पर्तुगीज जेहेतु पर्तुगीज थे ब्रिटिश आसपारी लेनी समझ 17th century जाए अच्छा तुम ब्रिटिश पर्तुगीज पर पाद देले किए ना ब्रिटिश 1765 बक्सर युद्ध पर रॉबर्ट क्लाइव दीवानी राइट नहीं गले आंकर सब एंड एम्पायर मुगल थे किए तुम शाहआलम टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज ऑब्टेन द नॉर्दर्न सरकार ओके से कौन कले ना नॉर्दर्न सरकार को सब ऑब्टेन करने नॉर्दर्न सरकार तो मैप देखी रिविजन टा एंड ब्रिटिश इंडिया माद्रास सॉरी हाँ तापर इज कंसिस्टिंग ऑफ द Chikakole, Rajamundry, Ellore and the Guntur in which the present undivided Ganjam district was included. And the British East India Company also got the Midnapur also which was a part of the Odisha. तो से को जिस सब पाई गले सेठी अनडिवाइडेड इंडिया से अनडिवाइडेड गंजाम तमर मेदिनापुर किसी जगह नॉर्दर्न सरकार मद्रास and the consisting of the Chikakole and the Rajamundry, Ellore, Guntur, chado. Thus the British authorities acquired the Odia speaking tracts. But in the south and in north, this facilitated them to conquer the Odisha with ease. The first settlement was made in the Harispur, present day Jagatsinghpur. तो जगतसिंहपुर रे बता हरिशपुर रे ब्रिटिश तांकर फास्ट एस्टाब्लिश बसई देला तापरे केमती कन्क्वेस्ट हला पुरी रे कौन कले ना 1803 रे ए ब्रिटिश कॉलोनियर हियर कोर्ट मार्च फ्रॉम द गंजाम टू कैप्चर पुरी तो ये कौन करथला ब्रिटिश रो जे थिले कॉलोनियल हारकोट कौन करले ना से मार्च कले गंजाम टू पुरी ताको एक्वायर पाई ऑन 18 सितंबर 1803 पुरी वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश कटक आफ्टर द कैप्चरिंग द पुरी द ब्रिटिश फोर्सेस इन 24 सितंबर से वर्ष मार्च टुवर्ड द कटक The Harcourt's artillery force defeated the Marathas by 14 October 1803. Entire Katak was under the British rule. तापर ही गला 1803 रू एटी तो फास्ट कले पूरी तापर कटक. The capitulation of the Baravati fort by the British and marked of the end of the Maratha rule on the Odisha.
तापर बालेश्वर को आइले सेप्टेम्बर 22 रे से 1803 रे कैप्चर्ड द बालेश्वर आल्सो अंडर द कैप्टेन मोरगान्स ओके कैप्टेन मोरगान को द्वारा ये बालेश्वर से 1803 रे कैप्चर हो गला एंड 17 डिसेम्बर से वर्ष द बैटल ऑफ द लास्परी होता एंडेड द ट्रिटी ऑफ द देवगढ़ द राघुजी भोंसले ऑफ द नागपुर सरेंडर द कटक एंड द बालेश्वर व्हिच इनक्लूड्स दी मुगलबंदी गरजाट जो आम देखी मुगलबंदी गरजाट तंकर जो 150टा खंडे डिवाइड करके टैक्सेस सब आणुले प्राय 32टा खंडे अमीन रखी से खाली टैक्स कलेक्शन है देन संबलपुर आम आसीगला संबलपुर यहाँ कौन अच्छी दस बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन ओडिशा अंडर लॉर्ड वेलेस्ली ओके कौन है तापर दैट इज द ट्रिटी ऑफ द देवगढ़ हो गला रघुजी भोसले सहित तापर कटक बालेश्वर व्हिच इंक्लूडेड इन द मोगलबाटिया गुजरात द कोस्टल पार्ट ऑफ द ओडिशा एंड बालेश्वर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी दस इट इज बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन द ओडिशा अंडर लॉर्ड वेलेस्ली संबलपुर से पुणे 1804 रे मेजर ब्रोकडाउन इज कनक्योर संबलपुर बाय डिफिटिंग द मराठा गवर्नर तांतिया फडणवीस एंड तांतिया फडणवीस को ये परास्त करके संबलपुर भी 1804 रे शामिल करने एंड विथ द डिपार्चर ऑफ द लॉर्ड वेलेस्ली द गवर्नर जनरल बार्लो ए स्पेसिफिस्ट रिस्टोर्ड द संबलपुर टू द मराठा एंड इन 1849 ब्रिटिश annexed it again with the application of doctrine of lapse of Dalhousie लॉर्ड डालहाउसी अच्छा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन केमती थिला ओडिशा डिवाइडेड इनटू 3 एडमिनिस्ट्रेशंस अंडर द मुगल फर्स्ट प्रोविंसेस कटक अंडर द बेंगल प्रेसिडेंसी सेकेंड इज द गंजाम अंडर द गंजाम एंड द कोरापुट अंडर द मद्रास प्रेसिडेंसी एंड थर्ड वाज द संबलपुर अंडर द सेंट्रल प्रोविंसेस तो जो कटक थिला से बेंगाल प्रेसिडेंसी अंडर रे थिला गंजाम कोरापुट तमरो मद्रास प्रेसिडेंसी अंडर रे थिले संबलपुर तमरो सेंट्रल प्रेसिडेंसी अंडर रे थिला and all three kinds of the land settlement जमींदारी रोहतारी मालवारी सब ये इम्प्लीमेंट होता तापर मूवमेंट इन दी ओडिशा एगेंस्ट द ब्रिटिश द ब्रिटिशर्स कलेक्टेड हेवी टैक्सेस से जो सब माने ऑपरेशन है कि सब जिनस आम जानी बेसी ऑपरेशन है टैक्स माने बढ़ला तापर से माने रिवोल्ट को बाहरी आसले इंडियन हिस्ट्री को भलसे देखी खाली रिवाइज कर पाइक रिबेलियन जो फास्ट रिबेलियन होता माने गोटे रिबेलियन ना है पाइक रिबेलियन इट इज ऑल्सो नोन एज द खुर्दा रिबेलियन दिस वाज द फर्स्ट अपराइजिंग एगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन द ओडिशा एंड ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस इन ओडिशा इन 1817 द पाइक ऑफ द खुर्दा एंड द पीपल ऑफ सम ऑफ द ओडिशा रिवोल्टेड एगेंस्ट द ब्रिटिशर्स which came to be known as the पाइक रिबेलियन ओके तमर जो माने थिले कौन जो पाइक मान थिले खुर्दार से माने जो टाइम रे रिवोल्ट को उतरी आसिले का ब्रिटिश एगेंस्ट से रिबेलियन को तमर पाइक रिबेलियन ना दिया गला तो कॉज ऑफ द पाइक रिबेलियन तमर कौन से 1817 तमर द कॉज ऑफ द रिबेलियन इन द खुर्दा इन 1817 से लैंड रेवेन्यू रो जति पॉलिसी थिला तांको ऑपरेशन करतले ए सब जिंस लिखा है डेप्रेव करतले द फास्ट मातृ ऑफ द ओडिशा इज द जय राजगुरु जय कृष्ण राजगुरु महापात्र नोन एज द पीपुल एज द जय राजगुरु वाज द रॉयल प्रिसेप्टर टू द मुकुंद्रदेव टू he revolted against the British with the army of the Paika warriors. This was also known as the Khurda rebellion, but the Britishers suppressed the rebellion which is helped some natives on 6 December 1806. Jai Rajguru was convicted to hang and Jai Rajguru considered the first martyr of the early freedom struggle against the British rule. His sacrifice laid down the foundation of the major revolt after 13 years. तापरे इवेंट ऑफ द पाइक रिबेलियन द लीडर थिले पाइक रिबेलियन रो तमरो बक्सी जगबंधु हला लीडर ऑफ द अपराइजिंग इवेंट वाज द बक्सी जगबंधु ए फॉर्मर जनरल ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द खुर्दा राजांगर जनरल थिले बक्सी जगबंधु द ट्राइबल ऑफ द बनपुर एंड द घुमसार एक्सेप्टेड द बक्सी जगबंधु एज देयर लीडर ओके तो ट्राइब्स माने थिले बनपुर और घुमसार से बक्सी जगबंधु को निजर लीडर रूप में मानुले दे ब्रेवली मार्च टुवर्ड द खुर्दा टू फाइट एगेंस्ट द कॉलोनियल पावर तो मार्च 27 1817 कौन है पाइक रिबेलियन बिगान इन खुर्दा द पाइकास ऑफ द खुर्दा अंडर द लीडरशिप ऑफ द बक्सी जगबंधु जॉइंड द चुहार्स ऑफ द घुमसार एंड दे ब्रॉन्ट द गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड सेक्ड द गवर्नमेंट ट्रेजरीज ऑफ द खुर्दा दे ब्रॉन्ट एंड ब्रोक डाउन द पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग एज वेल
तो ये गोटे सेमती रिबेलियन टाइप थिला गोटे फास्ट टाइम रिबेलियन फर्स्ट टाइम होता तुम जय राजपुर द्वारा तापर बक्सी जगबंधु ये तुम पाइक रिबेलियन ये तुम ये पाइक रिबेलियन है ये सब तुम पाइक रिबेलियन। अच्छा तो इम्पैक्ट कौन है दि लीडर्स ऑफ दि खुर्दा द लीडर्स ऑफ दि खुर्दा जे कि तुम गोदाबारिश मिश्र गोदाबारिश महापात्र प्राणनाथ पट्टनायक सांची राउतराय गंगाधर पाइक राय गोकुल मोहन राय चोमनी एम इंस्पायर्ड एंड बिकम फेयरलेस फ्रीडम फाइटर्स ऑफ दैट टाइम। तो एमती आसीपे कि भितर किए थे कि नथिले तेमती तुम सब नार सब कौन मिश्रा अच्छे तुम गोदाबारिश मिश्रा गोदाबारिश महापात्र तुम प्राणनाथ पट्टनायक सांची राउतराय गदाधर पाइक राय गोकुल मोहन राय चोरीमान ये सब जिन तुम ये 1825 जो बक्सी जगबंधु सरेंडर एंड ब्रिटिशर्स स्टार्टेड ब्रिंगिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड चेंजेस वेयर मेड ओडिया वाज एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट सर्विसेज द चेंजेस वेयर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द फील्ड ऑफ द जुडिशियरी द प्राइस of the salt was reduced and more salt was made available for the smooth purchase by the people। अच्छा रिभोल्ट ऑफ द 1857 और तार इफेक्ट कौन पड़ा ओडिशा रे 1857 रिभोल्ट विषय सब शुणी तो तार इफेक्ट ओडिशा सब कौन कौन पड़ा देखा इन ओडिशा as the impact of the great revolt has felt a great nationalist from the Odisha कहते तुम वीर सुरेंद्र साय ना तुम शुणी and his lifelong struggle during the revolt was remarkable। Another nationalist is Ramakrishna Samanta Sihar। Ramakrishna Samanta Sihar का नाम सुनी थे the जमींदार of the Baila also dedicated his life to this revolt। Raja Arjun Singh of the Parhat and his Diwan Jaggu also actively participated in the anti-British activities। ओके ये किए किए वीर सुरेंद्र साय रामकृष्ण सामंत सिंहार जो आमर जमींदार थे बालियार देन तमर राजा अर्जुन सिंह ऑफ द पारहाट द ट्रिब्यूटरी महल ऑफ द ओडिशा बिकेम द साइलेंट ड्यूरिंग द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। द किंग ऑफ द ट्रिब्यूटरी महल इज रेंडेड देयर सपोर्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट जमती कि तुम राजास ऑफ द मयूरभंज एंड केउंझर प्रोवाइडेड गुड सर्विस टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग द म्यूटिनी ऑफ द 1857। मयूरभंज केउंझर भल सर्विस ब्रिटिश को देते एंड रूलिंग चिफ्स ऑफ द टू नेटिव स्टेट्स वेयर रिवार्डेड विथ द टाइटल ऑफ द महाराजा बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो दुईटा रूलिंग चिफ थे जे कि तुम अवार्ड हेले महाराजा द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सब गोटे टेक्निकल पॉलिसी थिला। तो ये सब लीडर किए सब आसोसिएटेड होती जनक ना हूँ चंदन हाजुरी यूज ऑल्सो नेन एज द चकी खुंटिया का ना सब शुणी चकी खुंटिया ये गोटे प्रोमिनेंट लीडर थे सिपाही म्यूटिनीर हि मेंटेन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ द कौन रिबेल लीडरशिप बट वाज अरेस्टेड फ्रॉम द गाया। सुरेंद्र साय 1833 द संबलपुर रीजन रिवोल्टेड एगेंस्ट द ब्रिटिश रूल अंडर द सुरेंद्र साय। ओके देन तापर लास्ट को हजारीबाग जेल गले रामकृष्ण सामंत सिंहार ये गोटे भल पोएट थे अभिमन्यु सामंत सिंहार ही वाज सक्सेसर ऑफ द ग्रेट पोएट अभिमन्यु सामंत सिंहार ये थे सक्सेसर रामकृष्ण सामंत सिंहार। अगस्त 1857 विथ द सपोर्ट ऑफ द खंडायतास he revolted against the sunset law introducing by the Lord Cornwallis। sunset law माने जदि तुम सेमती टैक्स न दे पार सकाल बेलू तुम से जमीर आउ लीडर हो तुम जो जमींदार हो सनसेट लॉ कहुए। अच्छा ट्राइबल अपराइजिंग सब कौन कौन होता ओडिशा सब ट्राइबल अपराइजिंग सब कौन कौन होता। अच्छा फास्ट हूँ तुम ट्राइबल अपराइजिंग इन ओडिशा बहुत टाइप ट्राइबल अपराइजिंग होता कारण आमको ब्रिटिशर्स माने कि हो कि यूरोपियंस माने हो कि बहुत विशान मान शोषण कर गोटे तुम होता कौन घुमसार अपराइजिंग रे इट इज लीड बाय द डोरा बिशोई द्वारा तुम होता कौन दैट इज योर घुमसार अपराइजिंग एंड दे स्टार्टेड द घुमसार अपराइजिंग इन 1835 रे डोरा बिशोई द्वारा तुम घुमसार अपराइजिंग होता है। अच्छा द मेजर बिहाइंड अपराइजिंग वाज द सप्रेशन ऑफ द मेरिया माने ह्यूमन सैक्रिफाइस इन दी कौन डोमिनेटेड एरिया रे जो तुम ह्यूमन सैक्रिफाइस होता रखापी तुम यहाँ तो डोरा बिशोई वाज द मालिहा बिशोई और द हेड एजेंट ऑफ द कोन्स
ऑफ द गुमसार एरिया तो घुमासार एरिया रे तुमर ये आमर होचंती डोरा बिसोई होचंती वाज द महिल बिसोई और द हेड एजेंट ये हला the uprising after the arrest of the Dora Bisoi was led by the Chakra Bisoi. The Dora Bisoi Chakra Bisoi is related to the Gumsar uprising. तापर भूइया uprising. The Ratna Naik of the Keunjhar was organized the tribal fight against the Britishers. से तुम भूइया अपराइजिंग कहगला रत्न नायक ऑफ केउंझर तुम भूइया अपराइजिंग रे जने प्रोमिनेंट रोल प्ले करते ही आज रेस्ट देम फाइट एगेंस्ट दी धानजुरी दैट इज द धानुराय कौन लिखा है Dhanurjay against the Dhanurjay the new king who had taken away their rights and privileges तांका विषय ये जाए कि लड़ी थे and the Ratna Naik wanted to place the Vrindavan Bhanja as the king but he was captured and awarded capital punishment with the 6 others तापरे ये जो हमारा दी ग्रेट फाइमिना होता आमर जो नानका फाइमिन ऑफ 1866 to 67 ओडिशा गोटे ग्रेट फाइमिन जिम्रे जाइतिला जो कहली तुमको 10 लाख लोक पाखापाखि लोक डेथ हो जाते ओडिशा हिट बाय द मोस्ट डेवास्टेटिंग फैमिली ऑफ कॉलोनियल टाइम द गवर्नमेंट अंडरएस्टिमेट द सिचुएशन एंड नो मेजर वाज टेकन द रियलिटी सिचुएशन वाज इवेंचुअली अंडरस्टूड at the end of the May 6th माने 1864 but कई माने किसी भी कले नहीं and then the monsoon began due to the monsoon the transport by the sea was extremely difficult and even when gain reached the coast it could not be transported to affect part of the country से जो फेटी फाइमिन हो गला लोक माने खाइया को पाइले नहीं पैसा नहीं खाइया को पाइबे at least the million people dead in the Odisha due to this starvation भोकरे the Secretary of the State for the India appointed a commission in the December 1866 under the chairmanship of George Campbell to took matter कौन सब हेच कौन है तब देखि के आसीबो ता पर सब सिस्टम कौन हला तो पोस्ट ता परे ओडिशा फाइमिन परे द ब्रिटिशर वेयर ओबिलाइज्ड टू पे अटेंशन टू बैकवर्ड कंडीशन ऑफ द ओडिशा 1867 रे दे रेज द स्टेटस ऑफ द कटक जिला स्कूल टू हाई स्कूल कटक जिला स्कूल तो हाई स्कूल कर देले एंड इट बिकेम ए कॉलेज इन 1876 The opening of the educational institution in the Cuttack brought a new consciousness among the educational people in Odisha. Madhusudan Das became the first graduate of the Odisha. The post-Nanka era also marked the growth of the modern Odia literature. The Fakir Mohan Senapati and the Radhanath Rai, the Fakir Mohan Senapati, the post-era so ऐसा जिनसे मैंने post feminism पर ऐसा केमती develop ହେଇଛି ହେଲା माने जो मॉडर्न ओडिया लिटरेचर को तुम फकीर मोहन सेनापति आउ राधानाथ राय आम ओडिया लिटरेचर रे किसी कंट्रीब्यूट करते ओडिया लिटरेचर वाज डेवलप थ्रू द राइटिंग ऑफ द मधुसूदन दास विश्वनाथ कर रामशंकर रॉय देन गंगाधर मेहर और तुम नंदकिशोर बल द पोएट ऑफ द नानका एरा ऑल्सो सॉ ए डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे इन द कोस्टल ओडिशा फ्रॉम भुवनेश्वर टू खुर्दा इन 1896 फ्रॉम कटक टू भुवनेश्वर इन 1897 है भुवनेश्वर टू खुर्दा कटक टू भुवनेश्वर अच्छा उत्कल सभा the development of the education is lead to the awakening of the Odia peoples as a result of the first political organization formed by the educated Odia peoples was the Utkal Sabha in 1882. The Utkal Sabha was established at the Cuttack. The first meeting of the Utkal Sabha was held at the premises of the Cuttack printing press on 16 August 1882. अच्छा तो ओडिया उत्कल सभा गोटे थिला जति कि डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन लीड टू द अवेकनिंग ऑफ द ओडिया पीपल एज ए रिजल्ट द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय द एजुकेटेड ओडिया एज कॉल्ड एज द उत्कल सभा जार एस्टैब्लिशमेंट कटक रे थिला अच्छा चौधरी काशीनाथ दास और गौरीशंकर दास वर चूजन द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चौधरी काशीनाथ और गौरीशंकर दास चौधरी काशीनाथ और तुम गौरीशंकर दास तापर मधुसूदन दास वाज also associated with the Utkal Sabha. Gauri Shankar Rai, the editor of the Utkal Deepika, acted as the secretary of the organization. In 1886, the Utkal Sabha and the National Society sent their delegate to attend the session of the Indian National Congress. Thereafter, every year representative from the Cuttack attend the Congress session. Okay. तापर तमर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट सब कौन हितला सोशियो रिलीजियस मूवमेंट तुम ओडिशा सब कौन कौन होता
फास्ट हूँ तुम सत्य महिमा धर्म कौन सत्य महिमा धर्म इज ए रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ द हिंदूजिम इन ओडिशा महिमा गोसाई was the founder of the Mahima Dharma. In 1862 he became the Siddha and started preaching a new dharma, that is Mahima Dharma. Preach the first to आसले तमर सत्य महिमा धर्म तमर महिमा गोस्वामी तकर फाउंडर थिले महिमा गोस्वामी पर गोविंद बाबा भीम भोई का ना ये अटैच होगी अच्छी तो भीम भोई इज रिलेटेड विथ द सत्य महिमा धर्म ओके एंड द स्प्रेड ऑफ द message of the Satya Mahima Dharma towards the central and the western part of the Odisha. The basic principle of the Dharma was to worship one deity, that is called Alekna Para Brahma. अच्छा ख्रिस्टियन मिशनरीज माने सब किए थिले एठी किछि ख्रिस्टियन मिशनरी माने जे आसछन्ती तो the activities of the Christian missionary brought the socio cultural changes in the Odisha. 1809 विलियम कारे आसते द बाप्टिस्ट मिशनरी ऑफ द सेरामपुरे बट द ओडिया वर्सन ऑफ न्यू टेस्टिमेंट व्हिच वेयर प्रिपेयर्ड बाय द ओडिया स्कॉलर्स एंड नेम द पुरुषोत्तम पंडित इन 1820 द नंबर ऑफ द मिशनरी विथ विलियम एटा कौन लिखाई स्टार्ट तुम माने ख्रिस्टियन माने कौन सब आसिक धर्म प्रचार करते है गोटे देखी दुका दब तापर ब्रह्म मुवमेंट आमर ब्रह्म मुवमेंट होता चाइल्ड मैरेज को विडो रिमैरेज हाँपाई ब्रह्म समाज हैज बीन फॉर्म्ड इन द बेंगाल बाय द राजा राममोहन रॉय एंड स्प्रेडिंग द मोनोथेइज्म गोटे गॉड पर विश्वास कर 1869 हरनाथ भट्टाचार्य ए प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी इन द कटक कॉलेज ए फॉलोअर ऑफ द केशव चंद्र सेन फॉर्म द उत्कल ब्रह्म समाज एट द कटक ये कौन कले उत्कल ब्रह्म समाज जे केशव चंद्र सेन जड़े फॉलोअर थिले कि तुमर हरनाथ भट्टाचार्य तुम ये उत्कल ब्रह्म समाज स्थापन करदे तो ब्रह्म समाज बिल्ड ए ब्रह्म मंदिर एट द कटक एंड ब्रॉट आउट नंबर ऑफ द periodicals. Baleshwar and Cuttack were two important centers of the Brahmo Samaj movement. तापर फकीर मोहन सेनापति मधुसूदन राव प्यारीमोहन आचार्य चतुर्भुज पट्टनायक विश्वनाथ कर नंद किशोर बल ये सब आंक सहित अटैच्ड फ्रॉम द वेरियस सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट दैट दे आर इमर्ज द मास पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफकोर्स ये तुमको कहूला कि टोटाल आमर जो आम देखिले टोटाल आम जो देखिले कौन माने मॉडर्न हिस्ट्री आम जो ओडिशार मॉडर्न हिस्ट्री आम देखिले आप नेशनल मूवमेंट देखा बट ओडिशा जो टोटाल मॉडर्न हिस्ट्री आम देखिले आम ये कौन जानले कि आमर जो टाइम एंशिएंट थिला मेडिवल थिला ये सब राजा महाराजा थिले लास्ट आम इन्वेंशन स्टार्ट है तापर को टेम्पल सब किए किए कर आस्ते आस्ते जो यूरोपियन मानकर जो इन्वेंशन स्टार्ट है से टाइम ओडिशा से सब जिनसर कौन पड़ता इफेक्ट ओडिशा को प्रोमिनेंट लीडर माने थिले ये सब माने माने जो रिबेलियन हेड थिले कौन पाई से करुले ताकू सब आम कंप्लीट करदे नेक्स्ट आम जा तुम मूवमेंट को नेशनल मूवमेंट अच्छा टिके तार क्रोनोलोजी देखीदवा 1804 जेम तुम खुर्दा रिबेलियन होता जय कृष्ण राजपुर द्वारा 1804 तुम बटन एक्वायर दि संबलपुर 17 पाइक रिबेलियन बाय दि बक्सी जगबंधु 1825 सरेंडर करदे बक्सी जगबंधु 33 रिवोल्ट इन द संबलपुर बाय दि सुरेंद्र साय एंड 35 गुमसा रिबेलियन स्टार्ट होगा 57 सुरेंद्र साय चंदन हजूरी रामकृष्ण सामंतसियार जॉइंट दि सिपाही देन तुम नानका फाइमिन तुम आसला 1865 1867 ओपनिंग ऑफ दि कॉलेज इन दि कटक तापर 1868 भूया अपराइजिंग 1869 फॉर्मेशन ऑफ दि उत्कल ब्रह्म समाज 82 फॉर्मेशन ऑफ दि उत्कल सभा तापर ये तुम ओडिशा रे रेलवे स्टेशन होगा अच्छा who were the first European to make their settlement in Odisha, that is the Portuguese, under which Governor General British rule was first established in the Odisha, that is Lord
दैट इज रॉबर्ट क्लाइव फास्ट जनरल अंडर जोटि की रूल आम एस्टाब्लीश होता ओडिशा तापर रॉबर्ट क्लाइव इन 1765 acquired the दिवानी राइट्स फ्रॉम द शाह आलम टू ओके देन हरिशपुर द रीजन of the first British settlement is in हरिशपुर द रीजन of the first British settlement हरिशपुर कौट थिला तमरो जगतसिंहपुर द colonel harcourt lead the operation for the capturing of the Katak and the Puri when did the Baravati fort fell in the hands of the Britishers केबे बारवाटी फोर्ट ब्रिटिशर्स को हैंड को गला दैट इज योर 1803 रे द ट्रिटी ऑफ द देवगढ़ इज रिलेटेड टू द ट्रिटी ऑफ देवगढ़ तोर रिलेटेड टू कटक ट्रिटी ऑफ देवगढ़ रिलेटेड टू कटक द बालेश्वर वाज कैप्चर्ड बाय व्हिच ऑफ द जनरल ऑफ ब्रिटिश द बालेश्वर वाज कैप्चर्ड बाय व्हिच ऑफ द जनरल ऑफ द ब्रिटिश दैट इज योर कैप्टन मोर्गन बालेश्वर कैप्टन मोर्गन को द्वारा कैप्चर होइतला Captain Morgan Baleswar. In which year the Sambalpur was annexed under the Lord Dalhousie policy of the doctrine of the lapse? In which year Sambalpur was annexed under the Lord Dalhousie policy of the doctrine of the lapse? Of course, तमरो 1849 रे. Which among the following was not as administrative unit of the Britishers in the Odisha? That is Malkanagiri. अच्छा which historical event of the Odisha has been termed as the first war of the independence? That is Paika rebellion. Who among the who is considered the first martyr of the first martyr किए थे तमरो ये बा बक्सी जगबंधु 12 नंबर बक्सी जगबंधु then तोर which among the following is an impact of the Paika rebellion impact कौन हितला reduction in the price of the salt and abolition of the zamindari system judicial reform हेतला और reduction in the price salt हेतला who is called the great nationalist of the Odisha during the 1857 revolt in the Odisha who is called the great nationalist of the Odisha during the 1857 revolt in Odisha किए थिले तमरो वीर सुरेंद्र साय revolted against the Britishers in 1833 from which region of the Odisha that is from the Sambalpur who is associated with the Gumsar uprising that took place in 1835 Gumsar uprising ro किए नहीं तमर चे डोरा बिसोई and your Mary sacrifice the cause of the Gumsar uprising was associated with the human sacrifice the Ratna Naik of the Keonjhar is associated with the uprising of which of the movement तमर के रत्न नायक एटी के तमर कहिथिले ब्रह्म रत्न नायक तमर सॉरी भुइया रत्न नायक of the Keonjhar हां भुइया uprising then तमर आउ कोन रहला Odisha was affected by the Nanka famine during which of the year 66 to 7 then post Nanka era brought a massive changes in the field of education and literature. Who was the commissioner of the Odisha during the famine of 1866? Who was the commissioner of the Odisha during the famine of 1866? That is your George Campbell होचंती से टाइम रे थिले तमरो the construction of the railway coastline of the Odisha come in से तमरो म 96 आडू आसनथला 22 नंबर बी 96 when was the उत्कल सभा established at the कटक उत्कल सभा कटक रे केबे एस्टैब्लिश हेतिला 1882 रे who among the following was the first president of the उत्कल सभा at the कटक that is the काशीनाथ दास that is the सत्य महिमा धर्म post सत्य महिमा धर्म कहा को मानुतिला सत्य महिमा धर्म रेस्ट टू एटा तमरो फिलंथ्रोपी 25 नंबर कौन 25 नंबर दिया 25 नंबर बी हाँ से फिलंथ्रोपी हु वाज द हेड ऑफ द सत्य महिमा धर्म रो हेड किए थिले इट इज योर महिमा गोसाई हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ ओडिशा एट द कटक इन 1837 किए बसैतिले फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस दैट इज योर
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନାରୀ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଅଫकोर्स ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ତମର ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ କରିଥିଲେ। ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଂ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସଭାସ ଆଫ୍ ଦି କଟକ, କିଏ ତମର କରିଥିଲେ ଏଇ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ତମର କରିଥିଲେ ହରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦେନ୍ which were the two important center of the ବ୍ରହ୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ in ଓଡ଼ିଶା, କିଏ କିଏ ତମର ବ୍ରହ୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ହେଇଥିଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର କଟକ ଆଣ୍ଡ ବାଲେଶ୍ୱର। and it is your the Paiko rebellion was the voice against the mighty Britishers, ठीक अच्छी the terminating the large revenue system of the British forced the Paiko खोर्धा, ठीक अच्छे दुटा ठीक अच्छे। अच्छा तापर फ्रीडम स्ट्रगल बुझा।